Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is factors and multiples. Learning objectives. To learn factors and multiples, to apply the rules of divisibility by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. To find HCF and LCM by prime factorization method and division method. Now tune up. Which is the only even prime number? 2 is the only even prime number. Let's start. Factor. A number p is said to be a factor of another number q if it divides q exactly. For example, 2 is a factor of 12 but 3 is not a factor of 10 as it does not divide it exactly. Now properties of factor. Number 1. 1 is a factor of every number. Second, every number is a factor of itself. Third, the number of factors of a number is countable, that is finite in number. Number 4, every factor of a number is less than or equal to the given number. Number 5, every factor is an exact divisor of the given number. Number 6, the number of factors of a given number is always even. Now common factors. Factors which are common to a given pair of numbers. Now factors of 24 and factors of 18. सभी लिखे जो सेम है, कॉमन है, जो हमारे 24 को भी डिवाइड करते हैं और 18 को भी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 6. दीज आर कॉमन फैक्टर्स. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल. A number m is said to be a multiple of another number n if n divides m exactly. For example, 15 is a multiple of 3 but 16 is not a multiple of 7 as it does not divide 16 exactly. Now properties of multiple. Number 1, every number is a multiple of itself. Number 2, every multiple of a number is greater than or equal to that number. Number 3, the number of multiples of a given number is infinite. Now common multiples. Multiples which are common to a given pair of numbers. For example, the first 5 common multiples of 2 and 3 are 6, 12, 18, 24 and 30. On the basis of divisibility, factors and multiples number can be classified into various types. Now first is even and odd numbers. A whole number exactly divisible by 2 is called an even number. For example, 2, 4, 6, 8, 10, etc. are even numbers. All those whole numbers which are not even are called odd numbers. For example, 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. are odd numbers. Now facts. All numbers having 0, 2, 4, 6 or 8 in their ones place are even numbers. Now next is prime and composite numbers. Numbers which have exactly 2 factors, 1 and the number itself are called prime numbers. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13 are all prime numbers. 9 is not a prime number because it has 3 factors, namely 1, 3 and 9. Numbers which have 3 or more factors are called composite numbers. For example, 4, 6, 8, 9, 10, 12 are all composite numbers. Now facts. 1 is neither a prime number nor a composite number. 2 is the smallest prime number and 4 is the smallest composite number. Now next is co-prime numbers. 2 numbers are said to be co-primes if they do not have any factor common other than 1. For example, 8 and 25 are co-prime numbers. Factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. Factors of 25 are 1, 5 and 25. There is no common factor other than 1 between 8 and 25. So they are co-prime numbers. Facts. Co-prime numbers need not be prime numbers. Now next is twin primes. If the difference between 2 prime numbers is 2, then they are said to be twin primes. For example, 5 and 7 are twin primes. Now next is test of divisibility. To check whether a given number is divisible by a certain number or not, we need not do the complete division. There are some quick and short tests of divisibility. These tests are given below. Divisibility by 2. A number is divisible by 2 if it has in its ones place 0 or even numbers, that is 2, 4, 6 or 8. For example,
124 is divided by 2 is equals to 64. 124 is divisible by 2 as it has 4 in its ones place. Now divisibility by 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. For example, 249 is equals to 2 plus 4 plus 9 is equals to 15. 15 is divisible by 3 is equals to 4. 3, 4, 8, 6. 3 plus 4 plus 8 plus 6 is equals to 21. 21 is divisible by 3, that is equals to 7. Now next is divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the digits at ones and tens place, means last two digits, is divisible by 4 or the number has 00 as its ones and tens place. For example, in 2832, 32 is divisible by 4. In 13600, 00 being at ones and tens place is divisible by 4. Now divisibility by 5. A number is divisible by 5 if the digit at ones place is 0 or 5. For example, 1689085 is divisible by 5 as it has 5 at ones place. 628470 is divisible by 5 as it has 0 at ones place. Now divisibility by 6. A number is divisible by 6 if it is even and sum of its digit is divisible by 3 or a number is both divisible by 2 and 3. For example, 56292 has even number at ones place and 5 plus 6 plus 2 plus 9 plus 2 is equals to 24, which is divisible by 3. Therefore, 56292 is divisible by 6. Now divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. For example, 7884 is equals to 7 plus 8 plus 8 plus 4 is equals to 27, which is divisible by 9, that is equals to 3. Now next, divisibility by 10. A number is divisible by 10 if the digit at ones place is 0. For example, 56080 is divisible by 10. Now more divisibility tests. Divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by the digits at last three places, means hundreds, tens and ones, are zeros, 3 zeros, or is divisible by 8. For example, 846584 has 584 at its hundreds, tens and ones place, which is divisible by 8. 584 is divisible by 8, that is equals to 73. Therefore, 846584 is divisible by 8. Also, 9442000 has 3 zeros as its hundreds, tens and ones place. Therefore, 9442000 is divisible by 8. Now, next is divisibility by 11. A number is divisible by 11 if the sum of the digits in even places is equal to the sum of the digits in the odd places or the difference of the two sums is divisible by 11. For example, in 92641879 हमने इनके places लिखे even, odd, even, odd, even, odd, even, odd. The sum of the digits at odd places, that is 9 plus 8 plus 4 plus 2, that is equals to 23. The sum of the digits at even places, that is 7 plus 1 plus 6 plus 9 is equals to 23. Therefore, 92641879 is divisible by 11. B part में in 46677818 even odd numbers लिखे. The sum of the digits at even places is equals to 1 plus 7 plus 6 plus 4 is equals to 18. The sum of the digits at odd places is 8 plus 8 plus 7 plus 6 is equals to 29. दोनों का difference 29 minus 18 is equals to 11. Therefore, 46677818 is divisible by 11. Now next is making a number divisible. When a number is not exactly divisible by a given number, we can subtract the remainder from the number to make it divisible by the given number. Example करते हैं. What should be subtracted from 691675 to make it divisible by 8? Solution करते हैं. We know that a number is exactly divisible by a given number if no remainder is left. हमने इसको 8 से क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास
रिमाइंडर कितना आया 3. इफ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर it would exactly be divisible by 8. So 691675 minus 3 is equals to 691672, which is exactly divisible by 8. Therefore 3 should be subtracted from 691675 to make it divisible by 8. Now practice time 8.1. Question number 1. Write the factors of the following numbers. A part 8 के factors लिखने हैं. 1 multiply by 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 से नहीं होगा, 4 से हो गया. तो फैक्टर्स क्या क्या आ गए 1, 2, 4 एंड 8. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ए पार्ट करते हैं. 7 के मल्टीपल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 1 2 3 4 5. 5 मल्टीपल्स लिख दिए हमने. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम और कंपोजिट. 23 इसके फैक्टर्स लिखते हैं. 23 के फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 23, 1 एंड इट सेल्फ, सो इट इज अ प्राइम नंबर. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विदाउट एक्चुअल डिवीजन टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ए पार्ट बाय 2. फर्स्ट वाला वंस प्लेस पे 2 है, यस इट इज डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट 1 है वंस प्लेस पे, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट थर्ड में वंस प्लेस पे 3 है, ओड नंबर है, नॉट डिविजिबल बाय 2. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Select the co-prime numbers from the following pair of numbers. A part करते हैं. 7 and 14. 7 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 and 7. 14 के फैक्टर्स लिखेंगे that is 1, 2, 7 and 14. ये तो आपके 1 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, राइट. और को प्राइम नंबर्स कब होते हैं जब सिर्फ 1 आपका कॉमन फैक्टर हो. तो ये तो 1 से ज्यादा है, तो दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स. सेम मेथड से बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे और चेक करेंगे विच आर को प्राइम और नॉट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. राइट द फर्स्ट 10. ए पार्ट प्राइम नंबर्स. फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हमें लिखने हैं. प्राइम नंबर्स में 1 आपका ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, तो 2 आपका है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद आपका 29 है. तो दीज आर द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के गिवन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. The largest common factor of 2 or more numbers is their highest common factor HCF. For example, the factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. The factors of 36 are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. The common factors of 24 and 36 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. The greatest common factor among these. तो इन सभी common factors में से सबसे बड़ा क्या है आपका 12. So the largest common factor of 24 and 36 is 12. The highest common factor is also known as the greatest common divisor, GCD. Now, prime factorization. When a number is written as the product of prime numbers or factors, only then that expression is called the prime factorization of the numbers. Example करते हैं. Example 1. We can write 30 as solution. 30 is equals to 2 multiplied by 15 is equals to 2 multiplied by 15 के further 3 multiplied by 5. Here 2, 3, 5 are prime factors of 30 and 2, 3 and 5 is called the prime factorization of 30. Now method of finding prime factorization of a number. Step 1. Find the smallest prime factor of the number. Step 2. Divide this number by this smallest prime factor. Step 3.
Again divide the quotient by its smallest prime factor. Step 4. Continue this process till we get the quotient as a prime number. एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल 2. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 320. सॉल्यूशन करते हैं. तो 320 के प्राइम फैक्टर्स तो हमने देखा 0 है आपके वंस प्लेस पे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 1 = 2, 2 6 = 12, 0 अगेन 0 है, अगेन 2 से 2 8 = 16, अगेन 0 है, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2 5 = 10 and 5 1 = 5. Now thus we can write 320 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5. This is the prime factorization of 320. Now next is finding HCF by prime factorization. First we find the prime factorization of the given numbers. Then the product of all common prime factors is obtained. This product is the HCF of the given numbers. Example करते हैं. Example 3. Find HCF of 16 and 18. Solution करते हैं. Prime factors of 16. 16 के prime factors निकाले हमने. That is 2 into 2 into 2 into 2. Prime factors of 18. 18 के prime factors निकाले. That is 2 into 3 into 3. अब हम क्या करेंगे? The common prime factors of 16 and 18 is, दोनों में common क्या है? 2 2. 3 ऊपर वाले में नहीं है. Thus HCF of 16 and 18 is 2. Next करते हैं. Example 4. Find the HCF of 96, 144 and 256. Solution करते हैं. Prime factors of 96. 96 के prime factors है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3. 144 के prime factors निकाले. That is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. 256 के prime factors निकाले हमने. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. इसके बाद Thus the HCF of 96, 144 and 256. 2 सभी में है. 1 time, 2 time, 3 times, 4 times and 3 नहीं है. तो 4 times 2. 2 into 2 into 2 into 2. 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16. 16 is the HCF. The prime factorization method of finding HCF is not very convenient for large numbers. Now finding HCF by long division method. This method is useful in finding the HCF of big numbers. In it, the greatest number is divided by the smaller number. The remainder is treated as the next divisor and the divisor of the first, the smaller, is made the dividend. This method is continued till remainder 0 is obtained. The last divisor is the HCF of the two numbers. Example करते हैं. Example 5. Find the HCF of 120 and 512. Solution करते हैं. In 120 and 512, 120 is smaller than 512. तो 512 को हम डिवाइड करते हैं 120 से. 120 4 = 480 माइनस किया, रिमाइंडर इज 32. अब जो ये 32 रिमाइंडर आया, इट बिकम्स द डिवाइजर, और जो पिछला डिवाइजर था इट बिकम्स द डिविडेंड 120. नाउ 32 3 = 96 माइनस किया 24. नाउ 24 becomes new divisor and 32 becomes new dividend. 24 1 = 24. Now minus किया, remainder is 8. Now 8 becomes new divisor and 24 becomes new dividend. 8 3 = 24 माइनस किया 0. Now 8 के डिवाइड किया तो हमें क्या आया? रिमाइंडर 0. Here the last divisor is 8. Therefore, HCF of 120 and 512 is 8. Now, example 6. Find the HCF of 125, 575 and 830. Solution करते हैं. Let us choose the bigger number and find their HCF. तो bigger number हमारा क्या है? 830. 830 को उससे छोटा नंबर 575 से डिवाइड किया. 575 1 = 575 माइनस किया 255. 255 becomes new divisor and 575 becomes new dividend. 255 2 = 510 माइनस किया 65. 65 becomes new divisor and 255 becomes new dividend. Now 65 3 = 195 माइनस किया 60. Now 60 becomes new divisor and 65 new dividend. 60 1 = 60 माइनस किया 5.
Now 5 becomes new divisor and 60 becomes new dividend. Now 5 से करेंगे, 5 1 * 5 माइनस किया 1 10, 5 2 * 10. Now therefore HCF of 575 and 830 is 5, क्योंकि 5 से जब हमने डिवाइड किया रिमाइंडर आया हमारा 0. Now we find the HCF of 5 and 125. अब 125 को 5 से डिवाइड किया, इट इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल. तो 25 हमारा क्या आया, कोशेंट, एंड 0 इज द रिमाइंडर. Thus the HCF of 125, 575 and 830 is equals to 5. Now practice time 8.2, question number 1. Write the common factors of. A part कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, तो 40 के फैक्टर्स निकालेंगे हम. 1 × 40, 2 × 20 एंड 3 से नहीं होगा. 4 × 10, 5 8 × 40, 6 से नहीं, 7 8 9 10. तो 40 के फैक्टर्स हुए हमारे 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40. नाउ 60 के फैक्टर्स निकालेंगे हम. 1 × 60, 2 × 30, 3 × 20, 4 × 4 1 = 4, 4 5 = 20, 5 है 5 × 5 1 = 5, 5 2 = 10, 6 × 10, 7 नहीं है, 8 नहीं है. तो 60 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60. नाउ क्या निकालना है हमें, कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है एंड 10 दोनों में कॉमन है. 10 के बाद 20 दोनों में कॉमन है. यस, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 40 एंड 60. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारे पास है 22. 22 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे. 2 1 * 2, 2 1 = 2, 11 1 = 11. तो 22 के हमारे क्या है, 2 × 11. नाउ नेक्स्ट इज 66. 2 से स्टार्ट करें. 2 3 = 6, 2 3 = 6, 3 से करेंगे. 3 1 = 3, 3 1 = 3, 11 1 = 11. तो 66 के हमारे प्राइम फैक्टर्स है 2 × 3 × 11. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 121. 11 1 = 11, 11 1 = 11, 11 1 = 11. तो यहाँ पे 121 के हमारे क्या है, 11 × 11. सो HCF क्या रहेगा, सभी में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन है आपका 11. तो 11 इज द HCF. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. ये पार्ट करते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 78 एंड 210. तो 210 को डिवाइड करेंगे 78 से. 7 3 = 21, बट बड़ा हो जाएगा तो 2 पे लेंगे. 2 8 = 16, 6 1 कैरी, 2 7 = 14 प्लस 1 इज 15. 156 माइनस करेंगे. 10 - 6 इज 4, 10 - 5 इज 5. नाउ 54 becomes new divisor and 78 becomes new dividend. 54 1 = 54, माइनस करेंगे. 8 - 4 इज 4, 7 - 5 इज 2. नाउ 54. नाउ 24 2 = 48, माइनस किया. 14 - 8 इज 6, 4 - 4 इज 0. नाउ 24, 6 4 = 24, माइनस किया 0. नाउ HCF इज 6. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज LCM. The least common multiple LCM of 2 or more numbers is the smaller number that is a multiple of all the numbers. Let us consider the numbers 4 and 6. The multiples of 4 are 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5, 4 × 6. That is 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. are the multiples of 4.
Also 6, 12, 18, 24, 30, 36 are the multiples of 6. The common multiples of 4 and 6 are 12, 24, 36, etc. The lowest common multiple of 4 and 6 is 12. Common, सबसे छोटा क्या है? Least, that is 12. The least common multiple is also called LCM. To find the LCM by prime factorization. This method of prime factorization consists of the following steps. Step 1. Find the prime factors of each of the given numbers. Step 2. Collect the largest number of occurrences of each prime factor. Step 3. Multiply these collected factors. The product is the required LCM. Example करते हैं. Example 1. Find the LCM of 64, 48 and 40. Solution करते हैं इसका. Let us find the prime factorization of given numbers. 64 के हमने prime factors किए, that is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 48 के prime factors किए, that is 2 into 2 into 2 into 2 into 3. 40 के prime factors किए, that is 2 into 2 into 2 into 5. The maximum number of times the factor 2 occurs is 6. 6 times यहाँ पे 2 आ रहा है. The maximum number of times the factor 3 occurs is 1. 3 कितनी बार आ रहा है? 1 time. The maximum number of times the factor 5 occurs is 1. 5 कितने times आ रहा है? 1 time. So LCM of given numbers is equals to 6 times 2 multiply by 3 multiply by 5. That is equals to 960. To find the LCM by division. This method of finding LCM consists of the following steps. Step 1. Divide the given numbers by the prime numbers 2, 3, 5, 7, etc. which is common factor of at least 2 of the numbers. Step 2. Write the quotient and undivided numbers in third row. Step 3. Continue the process of dividing by a prime factor which is common to at least 2 numbers till we reach a stage where no prime factor is common to 2 numbers in a row. Step 4. Multiply all the divisors and the numbers in the last row. This product is the LCM of the given number. Example करते हैं. Example 2. Find the LCM of 18, 45 and 60. Solution करते हैं. सभी को एक साथ रखा. देखा 18 और 62 से डिवाइड हो रहे हैं. 2 9 जा 18, 45 as it is. 2 3 जा 6, 30. Again 2 से डिवाइड हो रहा है 30, तो 2 से किया. 9 as it is, 45 as it is. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. अब 2 से नहीं हो रहा, 3 से स्टार्ट किया. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15. Now next again 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 and 5 as it is. 5 से किया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. Now thus the LCM of 18, 45 and 60 is, इन सभी डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into 2 into 3 into 3 into 5. That is equals to 180. Relationship between HCF and LCM of two numbers. For two given numbers, LCM multiplied by HCF is equals to product of the two numbers. LCM निकालना है, that is the first number multiplied by the second number divided by HCF. This relation gives a method for finding the LCM of two numbers if we know the HCF. Example करते हैं. Example 3. The HCF of two numbers is 5 and their LCM is 360. If one number is 40, find the other number. Solution करते हैं. Same formula लगाएंगे. LCM multiplied by HCF is equals to the first number multiplied by the second number. 360 is the LCM multiplied by HCF, that is 5. That is equals to 40 is the number, first number. We have to find out the second number. Now 360 multiplied by 5, 40 opposite side multiply हो रहा है, इधर आके divide हो गया, that is equals to second number. तो 0 से 0 cancel, 4 9 जा 36, 9 5 जा 45. 45 is the second number. Thus the required number is equals to 45. Now practice time 8.3. Question number 1. Find the LCM of the following numbers by prime factors. A part करते हैं. Question number 1. Prime factors निकालते हैं 48 का. 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. तो 48 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Now next number is 72. 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18. Now 3 से करेंगे. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो 72 का हमारा है
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 का आपका 2 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 9 ज़ा 16 9 ज़ा इज 144। 144 इज द LCM ऑफ द फैक्टर्स। सो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। ये पार्ट करते हैं इसका। सो इट्स 135 एंड 175। 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 and 175 as it is. Now again 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 and 175. Again 3 से 3 5 ज़ा 15, 175. Now 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 16 17 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 and 7 1 ज़ा 7. Now LCM of 135 and 175 is equals to 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 7. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 5 5 ज़ा 25, 25 7 ज़ा 25, 4 ज़ा 100, 25 7 ज़ा 175। मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 3 is 52, 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 is 12, 0 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 is 15, 5 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 is 3, 5 2 7 and 4, that is 4 7 2 5 is the LCM. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पजल बैग। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो OMR शीट में हम डी पार्ट को फिल करते हैं। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप रीड आउट करेंगे और करेक्ट ऑप्शन को फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्रैक द कोड। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 10 और 40 के बीच के प्राइम नंबर्स। 10 के बाद 11, 13 एंड 17, 17 then 19 then 23 then 29 then 31 then 37. These are the prime numbers between 10 and 40. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 24। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। तो हम क्या निकालेंगे? LCM। सभी का आप LCM निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट होट्स the smallest digit which will come in place of star when 45 star 782 is divisible by 6। तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा? तो कैसे करते हैं डिविजिबिलिटी चेक? जैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करके आप फाइंड आउट करेंगे विच नंबर रिप्लेस द स्टार्स। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मैथ लैब एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव। टू फाइंड द LCM ऑफ 2 और 3 नंबर से 11, 5 and 7. Materials required: grid sheets and color pencils. Method: on a grid sheet of a number grid, circle the multiples of 11 in red, the multiples of 5 in blue and the multiples of 7 in green color. The first number which is circled in all the 3 colors is the LCM. जो तीनों कलर से पहली जो नंबर सर्कल होगा that is the LCM. तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।